The definition of Boolean algebra. पूरा चैप्टर आज रिवाइज कर देते हैं क्योंकि बीच में बहुत टाइम चला गया आपकी छुट्टियों दिवाली छुट्टी में. ठीक है. So definition is a complemented and distributive lattice is called a Boolean algebra. Complemented and distributive lattice. So totally we have the 6 conditions here. First, 3 conditions for the lattice, that commutative property, associative property, and assumption law. Okay. Then distributive property, the 4th condition. 5th, bounded, means 0 element and I element exist. And 6th, complement of each element exist in a set. So if that 6 conditions are satisfied, we say that the given set is a Boolean algebra. Okay. अगर बीच में कहीं पे डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना. ठीक है. उसके बाद हमने एग्जांपल किया था S30 का, S30 GCD LCM. तो S30 GCD LCM हमको पता है वो लेटाइस है, लास्ट टाइम प्रूव किया था, मीन्स इससे पहले के चैप्टर में प्रूव किया हुआ है. उसके बाद उसको लेटाइस प्रूव करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कॉम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी. तो उसके लिए पहले 0 एलिमेंट और आई एलिमेंट फाइंड किए. 0 एलिमेंट इसमें क्या आएगा, S30 में 0 एलिमेंट क्या होगा, 1. S30 में 0 एलिमेंट आएगा 1 और I एलिमेंट आएगा 0 एलिमेंट आएगा 1, I एलिमेंट आएगा 30. ठीक है. यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा. So both are belongs to the S30. So it is a bounded lattice. Okay. Then we check the complement of the all elements. So 1 का complement होगा 30. Okay. 2 का complement आएगा 2 का complement होगा 15, because complement मतलब क्या होगा, जिन दो नंबर का GCD 1 हो, LCM 30 आए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे. तो 1 and 30 है, उसका GCD 1 आएगा, LCM 30 आएगा. So they are complement of each other. So 1 को has a complement 30, 30 has complement, 30 complement is a 1. Then 2 and 15, the GCD of 2 and 15 is a 1. LCM of 2 and 15 is a 30. So therefore 2 has a complement 15 and 15 complement 2. Similar way, 3 dash is a 10, 10 dash is a 3. GCD and LCM of 3 and 10, GCD is a 1, LCM is a 30. Similarly, GCD of 5 and 6, 1, LCM 5 and 6 is a 30.
So 5 dash is a 6, 6 dash is a 5. So that means S30, it is a complemented lattice. Now you have to check the distributive property. So for distributive property, we have A star B ring sum C, it is equal to GCD of A comma B ring sum C. B ring sum C means LCM of B comma C. So we know that GCD of A comma LCM of B comma C, it is a LCM of GCD of A comma B and GCD of A comma C. So that means we have A star B ring sum A star C. Okay. So here distributive property also satisfied. So therefore S30 is a Boolean algebra. Okay. Then we have checked for the S12. So in a S12, now we know that Sn GCD LCM, it is always lattice. The first three property are satisfied. So here we check complement property. So in a S12, if we want to find the complement of 2, then there is a no element in a S12 such that the GCD of 2 and element is a 1 and LCM of 2 and that element is a 12. So that means 2 dash is not exist. So therefore S12 is not an Boolean algebra. Okay? Because in a S12, S12 we have the elements are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So here 2, if we take 2 here, then 2 and 1 has a GCD 1 but LCM 2. 2 and 3 GCD 1 LCM is a 6, not 12. 2 and 4 GCD is 2, not 1. 2 and 6 GCD is 2, not 1. 2 and 12 GCD is 2. Okay. So there is no element such that the GCD of 2 and element is a 1 and LCM of 2 and element is 12. So 2 dash does not belongs to the S12. So it is not a Boolean algebra. I have given a here shortcut method one. Which one? How we can check the SN GCD LCM is a Boolean algebra or not? मैंने एक शॉर्टकट मेथड आप लोगों को सिखाई थी. एस एन दिया है तो वो बुलियन एल्जिब्रा हो उसके लिए एक कंडीशन सिखाई थी कि उससे आप आराम से चेक कर सकते हो. कौन सी मेथड है याद है? For Sn, you have to check the prime factorization of n. n का प्राइम फैक्टराइजेशन करो. अगर प्राइम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है देन इट इज अ बुलियन एल्जिब्रा. अगर प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो बुलियन एल्जिब्रा नहीं होगा. जैसे S30 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5. तो 2, 3 and 5. So प्राइम नंबर रिपीटेशन में नहीं आ रहा है. सो इट इज अ
बुलियन अलजेब्रा। S12 है तो उसमें 2 × 2 × 3, so 2 रिपीट हो रहा है, so it is not a Boolean algebra. Okay, similar way here, see, if we take the S64, then 64 means 2 raised to, we have 2 raised to 6, so 2 repeated, so that means it is not a Boolean algebra. Then we have 1001. What is the prime factorization of 1001? What is the prime factorization of 1001? क्या हुआ, कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है? 1001, so prime factorization is a 7, 11 and 13. So here prime numbers are not repeated, so it is a Boolean algebra. What about the S70? 70, it is a Boolean algebra or not? S70. Yes, because it has a prime factorization 2, 2, 5, 7. So there is no repetition, so it is a Boolean algebra. But if we take the S72, then if we take S72, S72, 2 रिपीट होगा उसमें, S72 में 2 रिपीट आएगा, ठीक है, so it is not a Boolean algebra, ठीक है। अगर मिनिमम मैक्सिमम दिया है तो मिनिमम मैक्सिमम में यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम दिया है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट तभी मिलेगा अगर जो सेट है वो सिर्फ 2 एलिमेंट का ही हो। 2 से ज्यादा एलिमेंट है सेट में तो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिया है 3 है 15 है तो 3 का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा और 15 का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी बट 3 एंड 15 के कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे।
सो कॉम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मिनिमम मैक्सिमम दिया है तो उसके लिए कंडीशन है कि जो सेट है वो सिर्फ दो ही एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। ठीक है, then it is a Boolean algebra, otherwise it is not a Boolean algebra. Okay, इंटरसेक्शन यूनियन में मोस्टली सभी सेट में बुलियन अलजेब्रा आ ही जाएगा। फिर भी उसमें चेक करने के लिए आपको पावर सेट चेक करना है। ठीक है, जो सेट दिया है वो चेक करना है कि वो किसी सेट का पावर सेट है कि नहीं। अगर वो किसी सेट का पावर सेट है तो वो बुलियन अलजेब्रा होगा। या फिर ये भी यूज कर सकते हो अपने जो स्टोन रिप्रेजेंटेशन थियरम यूज की थी सब बुलियन अलजेब्रा फाइंड करने के लिए, वो भी कर सकते हो कि अगर इंटरसेक्शन यूनियन वाला सेट दिया है वहां पे चेक कर लो कि जो इंटरसेक्शन यूनियन जो सेट है उसके एलिमेंट्स 2, 8, 16, 32 इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में है तो वो भी बुलियन अलजेब्रा होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है चेक करने के लिए बुलियन अलजेब्रा है कि नहीं। ओके, देन वी हैव एटम एंड एंटी एटम। फॉर एटम here we just give the another name to the star and ring sum. The ring sum we give the name is a join, and star meet. In short, ring sum is a we have the join means LUB and meet means GLB. Now we define the join irreducible element. So what is the join irreducible element? Join irreducible element means if we have the if lattice is given and element belongs to the lattice, it cannot be represented as a join of any two different elements of L, then it is called join irreducible element. Join of any two different elements of L means LUB of any two different elements. Okay, if any element cannot be written as LUB of any two uh, different elements of L, then it is called join irreducible element. In a hash diagram, we can how we can find the join irreducible element. हैश डायग्राम में कैसे फाइंड करते हैं? हैश डायग्राम में कैसे फाइंड करते हैं जॉइन इरेड्यूसिबल एलिमेंट? यस, ओनली one line coming from पूजा one line रितेश अप साइड के लिए है ना मीट इरिड्यूसिबल आएगा। हैश डायग्राम में जिस पॉइंट पर सिर्फ एक ही लाइन नीचे से आती हो उस पॉइंट को हम जॉइन इरिड्यूसिबल देंगे। ठीक है,
like here. यहाँ पे see here A, here we have only one line coming from the downside. Here also one line coming from the downside. Then here also we have only one line coming from the downside. Here one line coming from the downside. So these four are join irreducible. At E we have two lines from the downside. So it is a not join irreducible. Now in a join irreducible element, it is a cover of zero element, then that element is called atom. So here A, B, and C are called atoms because they are cover of zero element. Okay. Then we have meet irreducible element. So meet irreducible element means we cannot express the element as a meet of any two different elements of L. Okay. Meet irreducible element means we cannot express element as a meet of any two different elements of L. Okay. So that means you cannot represent the element by GLB of two elements. So here in a hash diagram we can check if there is coming only one line from the upside, then that element is called mid irreducible element. And if it is a covered by I element, then it is called anti-atom. Okay. Now here in a same hash diagram, see here at A we have only one line coming from upside, B also, C, D, and E also. Here we have only one line coming from upside. So A, B, C, D, and E. These are mid irreducible elements. And D, I is a cover of I is cover of D, I is cover of E. So therefore D and E are anti-atoms. Okay. Then we have this, we find the atoms and anti-atom of this lattice using hash diagram. If we draw the S30, then S30 is a, we have 1, 2, 3, 5, sorry, then 6, 10,
15 and 30. So okay, this is a hash diagram of S30. So which are the atoms and anti-atoms here? Here atoms is a 2, 3, 5. Because at 2, 3, 5, we have only one line coming from the downside and they are cover of zero element, that is a 1. So they are atoms. 6, 10, and 15, we have only one line coming from upside. So they are mid irreducible elements and they have covered by they are covered by 30, that is a I element. So they are anti-atom. Okay. तो S30 का हैश डायग्राम बना के चेक करके बोलो कौन से उसके एलिमेंट्स लिखो which are the joint irreducible elements, which are neat irreducible elements and atoms, anti-atoms. S70 है. वैसे ऑलरेडी हम एक बार कर चुके ये, पर फिर भी देखते हैं दिवाली में कितने का वाइट वॉश हुआ है.
Yes, atom is a 257. Anti-atoms. एंटी क्या होंगे? 10, 14 एंड 35। क्यों, बाकी सबको क्या प्रॉब्लम हुआ है? सिर्फ पूजा आंसर दे रही है। रितेश के आंसर है। इस टॉपिक में तो जानवी अच्छे से आंसर दे रही थी। See, we can check by hash diagram here. Okay. इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो सबको आ जाएगा। इसमें चेक करो। दिस इज अ हैश डायग्राम ऑफ S60। S60 का हैश डायग्राम है। तो इसमें मुझे जॉइन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, एटम्स लिखने हैं, मीट इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिखना है, और एंटी एटम लिखना है। चारों लिखने हैं। क्योंकि इस ये बुलियन अलजेब्रा नहीं है, इसलिए जॉइन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स जो है और एटम्स दोनों, मतलब एटम्स जो है उससे ज्यादा जॉइन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर बुलियन अलजेब्रा हो तो जो एटम्स है वही जॉइन इरेड्यूशन, मतलब जितने जॉइन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एटम्स होते हैं। पर बुलियन अलजेब्रा ना हो तो जॉइन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, उसमें से कुछ ही एटम्स होते हैं। 2, 3, 4, 5। Yes, good. 2, 3, 4, and 5. They are joint irreducible elements. From these four elements, 2, 3, and 5 are atoms. What about the mid irreducible? 12, 15, 30, 20, and 30.
So here 12, 20, 30, and 15. For this, we have only one line coming from the upside. So these are the mid irreducible elements, and 12, 20, and 30 they are covered by 60. So they are empty atoms. Then we define the set A of X, where A is a means A of X is A belongs to the Boolean algebra B. A belongs to the Boolean algebra B such that A is an atom and A related to X. Okay. So if we take the S30 here, then for S30, what is the here we have the atoms are 2, 3, 5. So A10 means we have checked the atoms which are related to the 10 we take in a set. So here 2 is related to 10, 2 divides 10, 5 divides 10. So A10 is a 2 comma 5. A2 then just 2 divides 2. So 2 is related to 2. So we have A2 is a only singleton 2. Then A30 means I element, so it contains the all atoms. So we have A30 is a 2, 3, 5. Then A15, so 3 is related to 15, 3 divides the 15, 5 divides the 15. So therefore 3 and 5, we have two elements only, 3 and 5. Okay. Then A6, so 2 related to 6, 3 related to 6, 5 does not related to 6. So 5 cannot here. We have just 2 and 3. Okay. तो ये आंसर्स फाइंड करो. पहले एटम्स कौन से हो गए वो बताओ. पी ऑफ यहाँ पे एटम्स कौन से आएंगे. तो जितने सिंगलटन सेट है वो सारे एटम्स में आएंगे. सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी एंड सिंगलटन डी. ठीक है. So here atoms are okay. Then if we find the A of A, then only singleton A will related to this side. So we have singleton A. Then for A, B, C, we have 3 singleton A, singleton B, singleton C.
Okay. Similarly, AC, so singleton A and singleton C. What about A of X? X means set. So A of X is a, we have X is a I element, so all atoms. That means singleton A, singleton B, singleton C, and singleton D. A of phi, null set. So A of phi is a phi. Okay. Remember, always for the zero element, we have always A of zero element is a null set. So we have phi. Either you have to write this way or this. ये मत लिख देना है. This is not phi. This is singleton phi. Okay. ये सारे हमने सम्स किए हुए हैं. इसमें से कोई एक करो. कौन सा करना है? 100 वाला कर दो. S 100. 100 वाला सॉल्व करो. मतलब आपको फाइंड करना है 100 के A of 1, A of 2, then A of 4, A of 10, A of 25, A of 50, and A of 100. इतना फाइंड करके देना है. Yes, A of 2 is a 2, A of 4 is a, अच्छा A of 5 रह गया. ओके, लिख दो वो भी. A of 5 is a 5.
इसमें सिर्फ दो ही एटम है, 2 and 5। तो जहाँ पे मैक्सिमम वही एलिमेंट्स ज्यादा मिलेंगे, 2 and 5 के। यहाँ पे गलती से 4 कहीं पे लिख मत देना, क्योंकि 4 जो है वो एटम नहीं है, ठीक है। 400 को डिवाइड करता है पर वो एटम नहीं है। देन we have sub-Boolean algebra. Sub-Boolean algebra means if we have any subset of the Boolean algebra B and it satisfies the three conditions. The first is a 0 and I element belongs to the set. Then set is closed for a GLB and LUB. That means for any two elements of S, X star Y belongs to S, X ring sum Y belongs to S. And the complement of each element of that subset is exist and it is a belongs to the exist and belongs to that set, then it is called sub-Boolean algebra. Okay. See, first, second property, it is from the lattice. We have the any lattice. Then what is the sub-lattice? So any subset of the lattice, it called sub-lattice if it is closed for the GLB and LUB of the all elements. We find the tables of GCD and LCM, union and intersection, right? So same thing here you have to do that. Here, if we want here to prove that this set it is a sub Boolean algebra, then ये क्या हो रहा है? So here first see 0 element is a 1 and I element is a 70. Both are belongs to the A. So the first condition satisfied. Then for the second condition, we have to make the tables. We make table of here we have GCD and LCM. So you have to make the table of GCD and LCM. That GCD of 1, 7, 10, 70. Similarly here 1, 7, 10, 70. Okay. So you have to make the table of GCD and LCM
if all elements of the table belongs to the set, then the second condition is satisfied. क्या हुआ रितेश? ठीक है, जीसीडी और एलसीएम के टेबल बना दो और टेबल के सारे एलिमेंट्स अगर सेट में है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। ठीक है, अगर कहीं पे कोई एलिमेंट बाहर का आ रहा है, सेट का नहीं है, तो वहां पे लिख देना है that this element is not belongs to the set, so it is not closed for the GCD or LCM, so it is not sub-Boolean algebra. ओके, अगर सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो लिखना है that a set is a close for the GCD and LCM, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद लास्ट कंडीशन चेक करनी है, तो सारे एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट चेक कर लो। 1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 70, 7 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 10, 10 का कॉम्प्लीमेंट होगा 7, 70 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो सबके कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं और वो भी सेट के अंदर है। दैट मीन्स दिस सेट इज अ सब बुलियन एल्जिब्रा ऑफ S70। ठीक है, वैसे तो ये फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है ये जो स्टोन रिप्रेजेंटेशन थियरम है उसके ऊपर से। ओके, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने लिया था स्टोन रिप्रेजेंटेशन थियरम, important topic. The stone representation theorem is given that every Boolean algebra will always be isomorphic to the power set algebra. That means every Boolean algebra have the elements of the form 2 raised to n. 2 raised to n means either a 2, 2, 4, 8, 16, 32. Okay, the every Boolean algebra have the elements in a form of 2 raised to n. Now using this, we generate the sub-Boolean algebra. We generate the sub-Boolean algebra using atoms. See, if we have Sn is given, then the sub-Boolean algebra of the two element set is a 0 element and 1 element. This is always sub-Boolean algebra of any Boolean algebra. Then second case is we have 0, A is an atom, A, N by A, and I. Here we have Sn, so we have N by A. If we have P of A, then it is for P of A, then we have there A dash. Okay, in place of N by A, we have A dash. So here A dash means the A subtract from the given set. Okay, so
we have the four element set is a one is a 0 a n by a, then I element. If we have the Boolean algebra more than 16 elements, then you can get here one more way, that if you have a two atoms, then 0 LCM of that two atoms n upon LCM of a comma b and I element. And third case is we have 0 a n by a b n by b LCM of ab n upon LCM of ab and I. Mostly we have up to third case, means you have to find the sub-Boolean algebra with 8 elements. Okay, not more than 8 elements. So mostly we have up to this one. For 105 here, see we have the atoms are 3, 5, 7. So in a case 1 we have 0 element, so 1, and I element 105. Then second case, we have atoms are 3, 5 and 7. So 1, 3, 105 by 3. So it is a 35, 105, 1, 5, 105 by 5, 21, then 105. Similarly, 1, 7, 15 and 105. When we have the three atoms only, then in a case 1, we got one sub-Boolean algebra. Just remember this thing. See, case 1, case 2, case 3. If we have the three atoms, then in a case 1 we got one sub-Boolean algebra. In case 2 we got three sub-Boolean algebra. And in a case 3 we got one. The set itself is a sub-Boolean algebra. Okay. If we have the four atoms, then in a case 1 we have one sub-Boolean algebra. In case 2 we have 4 plus 3, 7 sub-Boolean algebra, and in a case 3 we have 6 sub-Boolean algebras. Okay. So remember this thing. So if you have a three atoms, then it has a sub-Boolean algebras are 5. If you have four atoms, then sub-Boolean algebras are 15. Okay, one itself. Case 4 itself a set. Okay. S30
ये सारे हमने सॉल्व किए थे, राइट। तो अभी तक यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। एस S210, इसका इसके सब बुलियन अलजेब्रास फाइंड करो। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210, 1, 2, 3, 4, 16 elements। इसके सारे सब बुलियन अलजेब्रा फाइंड करो और चैट बॉक्स में लिखो। ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ एग्जांपल है। सिर्फ रितेश और पूजा आंसर लिखे ऐसा नहीं होना चाहिए।
फोर एलिमेंट्स वाले 7 होंगे। यस, 1 6 35 210। उसी तरह 2 और 5 का एलसीएम ले लो 10। फिर 2 और 7 का एलसीएम 14। Yes, 10 is not atom, but 10 is a LCM of two atom, 2 and 5. When we have the 16 elements of the Boolean algebra, then in a case 3, we have 4 sub-Boolean algebra using 4 atoms and 3 more using LCM. अभी 8 एलिमेंट्स वाले बनाने हैं। 4 एलिमेंट्स वाले हो गए सारे। So here 1 and 2, 1 0, then 1 2 1 0 5 2 1 0 1 3 70 2 1 0 1 5, then 42 2 1 0 1 7 30 2 1 0, then 1 6 35 2 1 0 1 10 21 2 1 0 1 14 15 2 1 0. So these are the sub-Boolean algebra with 4 elements. Now with 8 elements. One, two, three, 6,
70, 35, 105. Yes, good. So here we use the two atoms to get the eight element set. So one, then two, three, then LCM of 2 and 3, 6. Now we divide the 210 by 6. So we have 35. Then if we divide by 3, we have 70. We divide by 2, 105. Then 210. Similarly, 1, 2, 5. LCM is a 10. Then divide, so 21. We divide by 5. We got 42. Divide by 2, 105. Then 210. Then 1, 2, 7. So LCM is a 14. So 15. Then 30, 105, 210. Then 1, 3, comma 5. Okay, 2. We have taken a 2 with all 3. Now we take 3 with remaining 2. So 2, 1, comma 3, comma 5. LCM is a 15. If we divide by LCM, we got 14. If we divide by 5, we get 42. Divide by 3, so 70 to 10. 1, 3, 7. So LCM is at 21. So we divide by 21, we got 10. Divide by 7, we get 30. Mhm. Oh, sorry. If we divide by, so the last one is a 1, 5, 7. LCM 35. If you divide by 35, 6, 7, so 30, 5, 42, 210. Okay, so the last one is this, and with 16 elements, the set itself as 210. So totally we got 15 sub-Boolean algebras. Okay.
Now the next we have Boolean expression. So in the next lecture we start with the Boolean expression, and we have the three topics remaining: this Boolean expression, midterm, max term, and K-back. Okay. In next lecture we start with a Boolean expression, Boolean variable, Boolean expression. Okay.